Good morning, sir. Okay, so yesterday we were discussing about t-test. Today we'll look at how. So yesterday I told you t-test is essentially a statistical tool wherein you'll be able to tell the reliability of the difference in mean. Okay, wherein if I am telling one group, let's suppose group one है and group two है, इन लोगों का mean है, mean one and mean two. If there is a difference that is coming between mean one and mean two, how reliable that difference is, वो reliability define करने के लिए आप t-test कर रहे हैं, ठीक है? जो inferential statistics है उससे आप इसकी reliability को क्या बोलते हैं find कर सकते हैं, and if it is reliable you'll be able to predict what is happening in future, ठीक है? Meaning if ever there is a mean 3, you'll be able to tell that this mean 3 will have some reliability and that it will be different from mean 1 and mean 2. ठीक है, उसके लिए आप टी टेस्ट यूज कर नाउ हाउ डू यू नो यस्टरडे आई टोल्ड यू टी टेस्ट का जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू डिफरेंस और गिवन बाय वेरिएंस नॉट डिफरेंस it is given by the variance between groups divided by variance within the group. So how different are two groups compared to how different are individuals in that group? Okay, एक ही group में let us suppose we have two groups. Each group have 10 individuals. There is group A and group B. There are 10 people in this and 10 people in this. So P value कैसा मालूम कर रहे हैं? What is the difference between group A and group B and variance within the group? मतलब एक group में एक एक individual के बीच में कितना difference है? What is the difference in individuals of that group itself? ठीक है, within the group what is the variance? वैसा आपको T value मालूम होगा. Now let us suppose you get this value as 3. ठीक है, a T value of 3 means that these two groups are at least 3 times different from each other. Okay, आपका variance between groups, see 3 आ रहा बोले तो obviously यहाँ पर आपका numerator is bigger than denominator. ठीक है, क्योंकि आपको proper whole number आ रहा है, यहाँ पर the numerator is bigger than denominator. It means that the variance in between groups is 3 times as different as variance within the group. मतलब एक group A is 3 times different than group B. So you can take it as anything. Let us suppose you are taking average ages of both the groups. ठीक है, इनकी एज लिया है इनकी एज ली है, ठीक है. एवरेज एज यहाँ पर लेट्स सपोज 59 एंड यहाँ पर आपको 45 है. तो जो डिफरेंस है आप 3 टाइम डिफरेंट है बोल के बोल सकते हैं. दैट वैल्यू आपको टी वैल्यू से आ जाती है, जो डिफरेंस वैल्यू है वो आपको टी वैल्यू से आ जाती है. नाउ as I was telling you, कल कहाँ पर छोड़े थे अपन, ये बोला मैं देन हाँ जी, हाउ डू वी नो इफ द टी वैल्यू इज बिग इनफ. ठीक है, अब वो वैल्यू जो है नाउ आई एम टेलिंग 3 है 2 है 1 है, टी वैल्यू जो भी आ रहा, हाउ डू यू नो दैट दैट वैल्यू विल बी बिग इनफ टू शो रिलायबिलिटी. ठीक है, नाउ यहाँ पर 1 भी है तो 1 है बोले तो इक्वल रहता है, ग्रुप 1 इज इक्वल टू ग्रुप 2. लेट अस सपोज आई हैव 1.5. इज दिस वैल्यू सिग्निफिकेंट? वो कैसा मालूम होता आपने को? वो मालूम करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड टी वैल्यू. The question is, how do we know if t value is big enough to tell you the difference between means and big enough to tell you the reliability of their difference. Okay? Each t value will have a corresponding p value, which is the probability. The probability that ये probability है, probability value बोलते हैं. This is the probability that the pattern which you are seeing, which is produced by the mean of those two, can be produced again. ठीक है, आप रिलायबली रिजल्ट्स को रेप्लिकेट कर सकते. ठीक है, दो ग्रुप्स में आपको दो मीन्स है, वो दोनों डिफरेंट है बोल के उसकी रिलायबिलिटी आप टी वैल्यू से मालूम कर रहे हैं. अब ये टी वैल्यू कितनी रहना मिनिमम, ठीक है, सो दैट यू कैन क्लियरली शो कि ये दोनों अलग है, उसके लिए यू विल हैव अ पी वैल्यू. If you are not able to understand, please feel free to ask. This can get a little confusing. Okay, what I'm telling is there is one fellow called t value. T value is telling
what is the reliability that mean 1 is different from mean 2. ठीक है. अब for you to decide whether that p value is big enough or not, you will have something called p value. P value will give the probability value. Probability value कैसे मालूम होती? You are running several experiments in history. ठीक है. Throughout history, there are several experiments of this sort, and what they are relying on is the probability that this experiment can be replicated again. क्योंकि इससे पहले भी आया था. Let us suppose someone found difference in ages, mean difference in ages in India. ठीक है. And mean difference in ages in Africa. ऐसे अलग अलग countries क्या करें? Now let us suppose a new country is made and they want to do the same experiment. When they are doing the same experiment, you can rely on p value because that p value is coming from all of this data. इससे पहले जो countries करे थे same experiment, उनको एक value आया था. वो वैल्यू के बेसिस पे यू कैन टेल दैट ओके दिस वैल्यू कैन बी रेप्लिकेटेड इन द न्यू कंट्री एज वेल. आप फिर से ये सेम एक्सपेरिमेंट नए कंट्री में भी अगर अप्लाई करें तो यू विल गेट रिलायबल एंड क्रेडिबल रिजल्ट्स. ऐसा ही हवा में नहीं आ जाता है आपको रिजल्ट्स. दैट इज पी वैल्यू. नाउ लेट अस सपोज द पी वैल्यू कम्स अराउंड p is equal to 0.05. let us suppose. ठीक है. This will indicate that there is a 5% chance that there is no real difference, meaning there is a 95% chance that the difference is real. Probability will give you the chance. Essentially probability से आप बोल सकते हैं कितना chance है कि जो difference आपको है वो real है या नहीं है. अगर p value 0.05 है, that indicates that there is a 5% chance that there is no real difference. That there is no real difference. अगर 5% चांस है नो डिफरेंस के लिए, देन देयर इज अ 95% चांस फॉर रियल डिफरेंस. वो दो ही ऑप्शंस रहते हैं, रियल डिफरेंस है या नो रियल डिफरेंस है बिटवीन द मीन्स. ठीक है. दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू आर रनिंग एन एक्सपेरिमेंट, लेट अस सपोज आपको p वैल्यू 0.01 आया, इट मींस दैट देयर इज अ 99% चांस. दिस विल गिव यू 1%, राइट? 1% chance that there is no real difference, but there is a 99% chance that there is a real difference between those two. If you have a p value of 0.1, this will be 10. मतलब there is a 10% chance that there is no real difference. जितना ज़्यादा p value आते जाएगा, उतना ज़्यादा आपकी research की credibility कम होते जाएगी. If your p value is very high, it will tell that the difference that you are getting between two groups is not real at all. Let us suppose you get a p value of 1. or you get a p-value of 0.8, it means that there is a 80% chance that the means of those two are not real. The difference is not real, and it is only because of chance. Generally, in research, most of research, credible research, you will take p-value of 0.5 or lower. Any experiment that you run, it should have a p-value of 0.5 or less. Meaning, all the research that you do, उसका टी वैल्यू एटलीस्ट 95% के अराउंड आना, या वो डिफरेंस जो बता रहे हैं आप वो एटलीस्ट 95% के अराउंड आना. ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आया? Or do you want me to explain it again? Because this will be on the test. आप लोगों को see, अगर if you are not able to do the problematic but the calculative problems and all, then you have to rely on all of theory. Theory B is not exactly easy. You have to understand theory, then you can memorize it. अगर understand ही नहीं करे तो memorize करना और मुश्किल हो जाता है. That is why I'm asking you. If you did not understand, ask. You can put it in the chat as well. You're not able to use a microphone. Okay. Now there are two types of t-test. Okay. एक t-test will be unpaired. Next one will be paired. अब unpaired t-test को independent sample test भी बोलते हैं या उसको between sample t-test भी बोलते हैं. ठीक है. Unpaired t-test और independent sample t-test और between samples t-test. This is used to compare the difference between two groups. Very, very simple.
There are two groups and you are trying to compare the difference between them. For example, you are testing the average quality of two different batches of beer. Okay, let's suppose there is a company who makes beer and you want to test what is the difference in average quality between two different batches. Okay, that will come under unpaired t-test. Then we have paired t-test. Paired t-test को within subjects test भी बोलते हैं या repeated measures test भी बोलते हैं या dependent sample test भी बोलते हैं. Paired t-test is also called within sample subject t-test या repeated measures t-test या फिर dependent samples t-test. इसमें क्या करते हैं? You are measuring one group. You are only measuring one group, but you are measuring it at them at two different timelines. ठीक है? So इसमें before and after का scenario आ जाता है. उसलिए paired है ये. ठीक है? आप एक ही ग्रुप को मेजर कर रहे हैं, but you are measuring them two times. For example, let us suppose we use the same example of a beer company. Okay. In the first unpaired t-test, you are simply measuring the average quality of two different batches of beer, right? इसमें आप क्या करते हैं? Now you are testing your control team है, who is testing the beer quality itself. You are testing them. Okay. Let us suppose there are a few people. Let's suppose there are 5 people who are responsible for checking the quality of beer. आप क्या कर रहे हैं? You are trying to find out how reliable those 5 are. ठीक है? You check or you test the quality control team of the beer company. ठीक है? तो आप क्या करते हैं? Quality control team को कैसा टेस्ट कर रहे हैं आप? अब alcoholic drink है ना? आप क्या करते हैं? You will check their balance. What you will do is you will check their balance before giving them beer, and let's suppose after you give them 2 to 3 cans of beer, you will check their balance again. If the quality of beer is very good, they will not be able to maintain their balance properly. If the quality of beer is not good, it will not work. Essentially, the alcohol will not work. Okay? In this paired t-test, I'll repeat once again. Paired t-test में आप क्या कर रहे हैं? You are taking one group and you are testing them at two different intervals or two times. एक time before intervention, second time after intervention. ठीक है? यहाँ पर the same example which we took, you are testing the average quality of beer. ठीक है? Two different batches of beer. तो आप क्या करते हैं? दो batches है ना आपके पास. Let us suppose you have batch 1 of beer and batch 2 of beer. तो आप क्या करते हैं? Day 1 पे आप ये 5 बंदों को बुला रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल टीम में से एंड उन लोगों का बैलेंस चेक कर रहे हैं. पहले यू रन आवर एक्सपेरिमेंट समवेयर, यू ट्राई टू फाइंड आउट द बैलेंस एंड यू विल गिव देम बियर 2 to 3 cans of beer, how much ever standard amount of beer for everyone. ठीक है? which is minimum amount of beer that will cause imbalance in individuals. ठीक है? उतना देके after that you check the balance of individuals. If you are reliably getting the result that balance of individuals are being skewed or they are not able to maintain balance, it means that the beer is working. Its quality is good. अगर balance of लोगों का अच्छा है, if the alcohol is not working properly, then the balance will remain normal or it will not change a lot. Okay, that will tell you how good the beer is. And on day 2 you can do for batch 2, the second batch of beer, उसके लिए कर सकते हैं. तो इससे आपको दोनों बैचेस की क्वालिटी क्या है पता चल जाती है, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस क्या है वो भी पता चल जाता है. ठीक है? समझ में आया आप लोगों को व्हाट इज पेयर्ड टी टेस्टिंग, व्हाट इज अनपेयर्ड टी टेस्ट? Okay. If you have doubts, please feel free to put it in the chat or ask. Don't mind repeating again. All right. Now we'll talk about something called ANOVA. Very commonly used statistical test is ANOVA is essentially analysis of variance. Variance क्या है? Let us suppose you have a data set like this. कितना डेटा है आपके पास? और आपके पास अलग अलग डेटा पॉइंट्स पूरा इधर डेटा पॉइंट स्प्रेड है. ठीक है? अब इन जनरल आपके पास मीन इधर आता. ठीक है? द एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू विल बी द मीन.
Just hold on 1 second. The exact center value will be a mean. Variance will be the difference between each data point and this mean. वेरिएंस को आप ऐसा भी देख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, आप इससे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करते ना, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर कर दिया तो आपको वेरिएंस आया था, ठीक है. सो वेरिएंस इज द वेरिएबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डेटा पॉइंट एंड द मीन. मीन से कितना दूर है, कितना डिफरेंट है, दैट विल गिव यू वेरिएंस. What you are doing is you are calculating the variance of all the data points. That is analyzing variance, analysis of variance, ANOVA. Okay, I'll repeat once again. Variance is the difference between the mean and each and every individual data point in the set of data. पूरा डेटा आपके पास जितना है उसमें एक एक पॉइंट मीन से कितना दूर है, कितना डिफरेंट है, उससे आपको वेरिएंस पता चलता है. Another way of looking at variance will be by squaring standard deviation. If you square standard deviation, you'll be able to get variance. Okay? If you analyze variance, analysis of variance is essentially ANOVA. Okay? Wherein you are trying to find the difference in between the mean and individual data points. अब ANOVA क्या करते हैं आप? You will use this. See, जैसा t-test में you are trying to find the difference between two means, right? आपके पास दो ग्रुप्स थे एंड उन लोगों के दो मीन आ रहे थे. वो दो मीन का डिफरेंस यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलायबिलिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स. इफ यू हैव 3 और मोर मीन्स, दैट इज व्हेन यू विल यूज ANOVA. ठीक है. सो यहाँ पर H नॉट और योर null hypothesis will be mu1 is equal to mu2 is equal to mu3, so on and so forth up to mu. Null hypothesis is that the mean of each population is the same. Okay, there is no difference in the mean of any population. Alternative hypothesis will be that at least one mean differs from the other. At least one mean differs from the other. ठीक है. You will have at least one different mean, okay, out of all the means that you have. यहाँ पर 3 या और ज़्यादा means ले रहा है. T-test में you are only comparing 2 means. ANOVA में it will help you compare 3 or more means. Alright. Essentially you are doing the same thing यहाँ पर. Now the idea is to test how one mean varies from other means. How mu1 is different from mu2. ये आप difference find करने की कोशिश कर रहे हैं. Analysis of variance. For example, I'll give you, okay. Let us suppose you are a school administrator. ठीक है. आप schools को manage करते हैं. And let us suppose there are 3 schools that you are managing currently. ठीक है. You are the owner or you are the administrator of 3 different schools and you are managing them. Now, you want to make sure that children in all of these 3 schools are learning the same things. Okay? Or at least you want to make sure that the quality of education that they are getting in all of these 3 schools is the same. Okay? Especially with respect to, let us suppose you are comparing using math. Okay? You are trying to find whether or not each and every student in all of these schools is getting the same quality of math education, okay, in any grade. अब आप क्या करते हैं? Let us suppose अच्छा ऐसा नहीं, I'll make it like this. अरे हाँ, हाँ जी, चलिए. अब आपके पास we have 3 schools. School 1, School 2 and School 3. ठीक है.
अब आपके पास 3 schools है, and let us suppose we have a lot of students in all of them. Let us suppose there are 5,000 students in each of them. अब इसमें एवरेज टेस्ट स्कोर मालूम करना ना, to find out whether they are getting equally good math education, what you will do is you will put a test. ठीक है, एक मैथ का एक कॉमन, let's suppose you are putting an algebra test. You choose some 2-3 chapters from algebra in class 10, let us suppose, and you are testing all the 10th class students in there. ठीक है, and let us suppose यहाँ पर बहुत ज्यादा population आ रही है. आप क्या करते हैं, एक छोटा सैंपल लेते हैं उसमें से. Rather than testing all the 10th class students in each of these schools, what you will do is you will take one small sample in all of them. So यहाँ पर let's suppose you are taking a sample of 10 kids in all of them. 10 का एक सैंपल है, इधर भी 10 का सैंपल है, इधर का भी 10 का सैंपल है. इससे आपको mu1 आता, इससे mu2 आता, इससे mu3 आता. ठीक है. Now it is up each and every kid, बच्चे को अगर टेस्ट करे, ठीक है, the average test score, it will become very skewed and it will become a very tedious process. It is impractical to check all students. ठीक है, because there are 3 schools, बहुत सारा हो जाता है डेटा. अब क्या करते हैं, एक एक छोटा छोटा पॉपुलेशन लेके, दिस इज, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, लेट अस सपोज म्यू डालने के बजाय म्यू इज पॉपुलेशन मीन, नो, आई विल ट्रीट इट एज एक्स, x bar 1, x bar 2 एंड x bar 3. ठीक है, तो मेरे को 3 मीन्स है. ये मीन से मैं क्या करता हूँ, आई विल रन अनोवा ऑन दिस सैंपल डेटा. ठीक है, ये मीन से मेरे को खाली डिस्क्रिप्टिव डेटा मिल जा रहा कि ये मीन स्कोर, लेट अस सपोज द मीन स्कोर ऑफ दिस इज, अच्छा मैं ग्राफ पे बताऊँ, लेट अस सपोज वी हैव सिनेरियो 1, केस 1, वेयर हाँ ऐसा है. And let us suppose हाँ, अब ये लो 80 and 100. ठीक है, लेट अस सपोज ये मार्क्स है. ठीक है, वाई एक्सिस पे मार्क्स है. आप क्या कर रहे हैं, तीनों स्कूल में से यू आर टेकिंग 10 स्टूडेंट्स एंड यू आर टेकिंग द 10th स्टूडेंट सैंपल एंड यू आर टेस्टिंग देम. ठीक है, मैथ का टेस्ट दिया सेम चैप्टर में एंड यू आर सीइंग द रिजल्ट्स दैट यू गेट, एंड आप 3 मीन्स निकाले उसके, अलग अलग मीन. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज द मीन ऑफ स्कूल 1, दिस इज द मीन ऑफ स्कूल 2, दिस इज द मीन ऑफ स्कूल 3. तो ये क्या रहता, x bar 1, x bar 2, x bar 3. ठीक है, अब let us suppose the value of x bar 1 is equal to 81, the value of x bar 2, so mean score of that school basically is 79 and mean score of x3 is 80.5 या 82. अब यहां पर क्या होता, because the means are so close to each other, this proves your null hypothesis. Your जो क्या बोलते हैं population mean है, mu1 is almost equal to mu2 is almost equal to mu3. Alternative hypothesis is क्या बोलते हैं disproven. There is no school that differs from each other. ठीक है, आपकी जो this thing थी क्या बोलते हैं null hypothesis, that will hold ground because these scores are very very close to each other. अब एक स्कूल से दूसरा स्कूल से तीसरा स्कूल, school 1, school 2, school 3, their average scores are very very close to each other. So the experiment will tell that, or the results that you get will be that our results fail to reject null hypothesis because the values are very close. ठीक है, यहां से आपको ये भी मालूम चल जाता है कि तीनों स्कूल में ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं. ठीक है, बिकॉज योर मीन स्कोर जो है वो सेम है. लेट अस सपोज इन द सेम सिनेरियो ऐसा रहता, x3 82 रहने का, ऐसा रहता, ऐसा रहता. imagine this is 50 or 50 भी,
45. ठीक है, यहां से अब क्लियरली पता चल जा रहा, बिकॉज देयर इज वन मीन विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू. The education that is being given in these two schools are very very close, but the education that is being given in this school, at least with the respect of math, is very different. 10th class math. So यहाँ से alternative hypothesis is proven and null hypothesis is rejected. Null hypothesis is says that all the means of all the schools will be equal. Alternative hypothesis tells that at least one mean is different. ठीक है, यहाँ पर ये सिनारियो में आपको क्या पता चल रहा, स्कूल 1 एंड स्कूल 2 में एजुकेशन अच्छा ही है एंड दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, वेयर इन द मीन टेस्ट स्कोर दैट यू आर गिविंग फॉर गेटिंग फॉर मैथ इज ऑलमोस्ट द सेम, बट इन स्कूल 3 इट इज वेरी डिफरेंट. 45 आ रहा है, मतलब वहां पर एजुकेशन अलग है. ठीक है, जो स्कोर है वो बहुत अलग है. It also tells you that that particular school, you need to concentrate on that school to pick up its education. अब ये समझ में आया तुम लोगों को how analysis of variance is done, what you are trying to see and how it is done. Even in textbooks you don't need to go into the calculative part and completely deep. I'm only describing the theoretical part of this. As long as you understand this much, it is enough. ठीक है, we'll do the types of this thing tomorrow. ठीक है, types of ANOVA है, जो types of ANOVA है वो कल करेंगे. So right, open your textbooks after the class and read the ANOVA and t-test कैसे करते हैं. You might be able to understand a little better. If you have doubts, you can message me anytime. Right.